Assalamu alaikum students, welcome to my channel SK Online Lectures. In this video we will learn the use of interjection. So सबसे पहले हम definition लिख लेते हैं interjection की. An interjection is a word or a phrase which expresses some sudden feelings or emotion like anger, joy, grief, surprise, etc. So any word or phrase used as a sudden exclamation can be called an interjection. An interjection is always followed by a sign of exclamation. वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जो हमारे खुशी, गम, गुस्सा, हैरानी, नफ़रत वगैरह के जज्बात का इजहार करे, इंटरजेक्शन कहलाता है. जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरजेक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. जॉय, grief, amusement, surprise, attention, doubt, address, orders, odds, approval, reproof. It is not a part of speech, for it does not express a thought or it is not related to any other word in the sentence. So, interjection is a word which used to express some sudden feeling or emotion. ये अज्ज़ाए कलाम में से नहीं है क्योंकि ये किसी ख्याल का इजहार नहीं करते.
या ये फ़िक्रे में किसी दूसरे लफ्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। I hope you enjoyed this lecture. Please share with your friends. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Keep watching. Allah Hafiz.